Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated physiology classes. Right now, at this physiology platform, we are going to discuss one very important topic, that is action potential generation. ये जो एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक है ये हमारे एग्जाम्स में, चाहे वो एमसीक्यू एग्जाम्स हो, चाहे वो थ्योरी एग्जाम्स हो, चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम्स हो, या फिर हमारे नीट, नेक्स्ट, एम्स, पीजीआई, जिपमर, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसका बहुत बढ़िया सा बेसिक बनाता है. सो विद द सिंगल एरो वी आर गोइंग टू हंट मेनी क्वेश्चंस हाउ ये एक्शन पोटेंशियल का जो कर्व हम जनरेट होते हुए देखेंगे. इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द अवर फिजियोलॉजी. जब हम नेक्स्ट ईयर फार्मा में जाएंगे तो क्लिनिकल इंटीग्रेशन, यस, फॉर दैट क्लिनिकल इंटीग्रेशन हमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन देखना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मसल रिलैक्स होगा तभी आप ऑपरेशन डील कर पाएंगे. सो अगेन दिस टॉपिक विल बी इंपॉर्टेंट. मसल एक्शन पोटेंशियल की तरह ही हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है. तो हार्ट की एक्टिविटी, एरिथमिया, ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब हम एक्शन पोटेंशियल कर्व समझेंगे. और इसी के जैसा मिलता जुलता हमारा नर्व का एक्शन पोटेंशियल भी होता है. सो विद द सिंगल टॉपिक वी आर गोइंग टू मेक द बेस फॉर अवर कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, फॉर अवर न्यूरॉन नर्व एक्शन पोटेंशियल, फॉर द अवर फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन, दिस ऑल द पॉइंट्स. और कई सारे डिसीजेस होते हैं जो इस एक्शन पोटेंशियल के बेसिस में ही समझे जा सकते हैं. So again, very warm welcome to all of you. Myself, Dr. Shrikant Verma, MBBS, MD, Anatomy, but I am teaching all the different kind of subjects since 2009. I am also international faculty at the different international universities at the Ukraine, our Armenia, as well as Kazakhstan. So we are going to learn this physiology topic. So starting, keep tight your pen, color markers, and कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन. बेटा नोट्स बनाते हुए चलेंगे क्योंकि नो डाउट क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी. यू विल डेफिनेटली एंजॉय द क्लास. लेकिन क्लासेस जो होती है वो आप 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में भूल जाते हैं. याद क्या रहता है? आपके नोट्स. सो गेट रेडी विथ योर कॉपी एंड द पेन. ओके, एंड एनी काइंड ऑफ द डाउट एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डू लाइव डाउट डिस्कशन. ओके, सो स्टार्टिंग द क्लास, we are going to look for the our action potential specifically for the muscle. लेकिन इस बेस में ही आपका मसल, यस, स्केलेटल मसल ये सॉल्व होगा. साथ में कार्डियक मसल का भी कॉन्सेप्ट बनेगा, एज वेल एज न्यूरॉन, इसका भी एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्शन. एक्शन मतलब, यस, यू कैन से एक्टिविटी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी. एक्शन पोटेंशियल, yes, it is the potential for the any kind of the activity. So in the muscle there is a contraction. So how the muscle contract? There is the one particular electrochemical changes that leads to the contraction of the muscle. So we are going to look for this. But before reading this topic, we must know the 3 terms. What are the 3 important terms which we have to understand? First is our polarization. Yes, what is the polarization? What is the polar? We have to know. Then we have to know what is the depolarization. And after the depolarization, we have to know what is the our repolarization. So we have to understand these our 3 different points. Okay, so just come to the our school life. Do you remember at the time of school what we were doing? Yes, we were studying the magnet. Suppose this is magnet, ये एक चुंबक है. Do you remember in any magnet, plus 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 they are at one side, minus 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 they are arranged at the another side. So that is having the north pole and the south pole. 2 different poles were there. तो ऐसा कोई भी सिचुएशन जब प्लस प्लस चार्जेस, एक टाइप के चार्जेस एक एंड में, दूसरे टाइप के चार्जेस दूसरे एंड में हो, इसे हम क्या कहते थे? दैट वॉज नोन एज अवर पोलराइज्ड कंडीशन. दिस इज अवर पोलराइज्ड कंडीशन. दिस
process when any molecule is present in this kind of the arrangement, that is polarization. Getting the point? You can say if one side is showing plus, another side is showing minus, then what you will say, that is our polarization. Getting the point, everybody? Fine. So yes, this is our polarization. Now try to understand the further points. See here, if due to any kind of the external factor, maybe temperature, maybe physical, or maybe any kind of the chemical changes, when this system is distorted, means what is happening, suppose this is the magnet, but there is a plus 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 plus, minus 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 minus, this all are getting distortion. So now this stage is known as depolarized condition, or you can say depolarization. Getting the point? This is our depolarization, when the system is haphazard, एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस, polarization. Very simple beta. And when the charges are disturbed, then it is depolarization. D means disturbed. Yes sir, D means disturb. कभी भी D word use हो means disturbance. Now see here, this molecule is again rearranging itself so that it can work properly. फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा. So what is happening? Again it is adapting the normal position. It is rearranging the normal position. So this is again the situation of the polarization. That's why what you will say, beta, this is our repolarization. Yes, this stage is re means again. So what you are getting the point? Can you catch? Yes. Again concentrate over the screen. See here, polarization. Okay sir. Depolarization. Fine sir. And the stage when again the molecule is being just like the previous condition, repolarization. Fine sir. Now we have to apply this all the situation in a cell. Fine. We are taking all the topic from the very basics. So what is happening in cell? So try to understand what is the situation. Yes, suppose this is our cell. Fine sir, this is our particular cell. Cell is having nucleus, cytoplasm and the cell membrane. In general physiology, we observe that outside there is a plus charges in extracellular fluid, more in sodium concentration. That's why there is a plus charge is dominating. Means there is overall plus charge on the outside. But when you are looking inside, the more there is our potassium charges. And according to the Mendeleev table, Mendeleev की जो हम periodic table देखते थे, उसमें हम पाते थे सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है. सोडियम इज स्मॉलर, पोटेशियम इज लार्जर इन साइज. So the sodium is having more positive charge. So remember, positive is outside. Inside also there is a positive charge, but relatively low positive. That's why you will say minus. Otherwise, chloride is also, other ions are also there. Okay, sir. So in this way, can you observe plus charge at one side, minus charge at another side? So what you want to say? बेटा इमेजिन करो कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, आपके टेबल के सामने मैं बैठा हूं, एंड वी आर डूइंग डिस्कशन. सो आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, what you want to say this situation? Polarized condition, depolarized or repolarized? Definitely plus at one side, another side is our minus, and it is at the resting condition. Okay, so what you will say, this is our polarization. It is polarized stage, plus at one side, minus at another side. Getting the point? Now try to understand our physics. See here, when we are putting अवर एनी काइंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अगर हमें इस करंट को मेज़र करना है तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया करंट को, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए. ओके, यस.
outside there is a plus, inside there is minus. Okay, so if you are putting any galvanometer in between, yes, your current will be deflected at 0, no current will flow. And in the same way, if you are putting galvanometer inside, अगर बेटा आपने galvanometer को अंदर रख दिया तो कोई वोल्टेज में डिफरेंस नहीं है, चार्जेस आर इक्वल, दैट्स वाई यू विल सी अगेन अवर 0 millivolt. But if you are putting any structure, any galvanometer, one end outside and another end you are putting inside, so you know outside there is the plus charge and inside there is the minus charge. So now the current will flow, now the current will flow and it will show certain kind, or it will not show the 0, so it will show, yes, it will show particular current potential, particular current potential. That particular current potential is known as resting membrane potential. Yes, always we read this term, resting membrane potential. So what is the resting membrane potential? Try to understand. शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, बट इन अवर क्लासेस ऑलवेज वी विल क्रिएट द वेरी गुड ट्रिक्स, निमोनिक्स एंड गुड वे ऑफ लर्निंग विथ इंजॉयमेंट. यस, हम कहेंगे नाम में ही सब कुछ रखा है, ब्रेक द नेम एंड गेट द आइडिया. हिंदी मीडियम में हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे संधि विच्छेद. जस्ट अप्लाई दैट अवर कॉन्सेप्ट हियर. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, रेस्टिंग कंडीशन, आराम की कंडीशन में मेम्ब्रेन, यस, सेल मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग. सेल मेम्ब्रेन ये जो है कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन. एट दिस सिचुएशन व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो व्हाट यू कैन से, इन द रेस्टिंग सिचुएशन this particular cell, it will flow current from the minus charge to the plus charge, that will be shown at the galvanometer. So whatever the reading here, that is known as resting membrane potential. So we are breaking the name and getting the idea. So I am going to define, क्योंकि वाइवा में MCQ में बेटा ये आपसे पूछा जाता है, what is the resting membrane potential. So first thing what you have to remember, in resting condition of any cell, fine sir. Second point, membrane and the potential. So you will say potential, or you can say current, millivolt. Potential difference, yes sir, potential difference where. Third point, across cell membrane, known एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. याद करते हैं, समझते हैं, नाम में सब कुछ रखा है. शेक्सपियर ने गलत कहा था. ओके, हम इसको इजी करते हैं. मेडिकल साइंस में कुछ भी आप पढ़ेंगे, यू हैव टू मेक इजियर. हाउ, ब्रेक द नेम, गेट द आइडिया. रेस्टिंग अभी याद हो जाना चाहिए, अब भी याद होना चाहिए. ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द सेल. कैसे याद आएगा, रेस्टिंग से. पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज आउटसाइड देयर इज अ प्लस, inside there is the minus. So what you will say, potential. कहां पर, yes, across the membrane, outside the membrane and inside the membrane. That's why you are using the term across cell membrane. That potential, that current, that difference in the voltage is known as resting membrane potential. आराम से, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं करना है. अब हमारे MCQs आते हैं. yes, क्वेश्चन. Yes, in skeletal muscle, if we are talking about the skeletal muscle, what is the resting membrane potential, minus 90 millivolt. MCQ. Another MCQ, yes, in our nerves, अगर हम नर्व्स की बात करें तो ये है आपका minus 70 millivolt.
MCQ. Okay, 70 and 90 you have to remember. Getting the point? So with the proper reference of our Gatton Ganong, this all the standard textbook, I am giving you the notes, and this e-notes I will share you in your app. So there is the app you can download, there is a study material, free study material, there you will get this video. Okay, so what I want to tell you, yes, this is our action potential. Fine. Okay, yes, this is the resting membrane potential. Okay sir, this is the resting membrane potential. So what is the action potential? Now we are at this stage कि हम समझ सके बेटा कि एक्शन पोटेंशियल क्या चीज होती है. सो राइट डाउन प्रॉपरली, आप भी नोट्स बनाते चलिए, बिकॉज अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, यू विल फॉरगेट दिस क्लास. क्लास बहुत अच्छी थी, इतना बस याद रहेगा, लेकिन क्लास में क्या था ये आप भूल जाएंगे. याद क्या रहेगा? आपका खुद का नोट्स. सो वी आर लुकिंग द एक्शन पोटेंशियल. यस, पोटेंशियल दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस. एक्शन during the activity of the muscle or during the activity of the nerve, that is our action potential. So what you can give the definition, this is our series of electrical changes or potential changes, electrical, or you can say potential changes. ये स्टेबल नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यू कैन से यस इट इज -90 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, बट एक्शन पोटेंशियल यहां एक्टिविटी हो रही है, ड्यू टू द एक्टिविटी इट इज नॉट स्टेबल. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वेयर इट ऑकर्स अगेन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दैट ऑकर्स इन अवर membrane potential. So the potential changes which is occurring in the membrane potential, no other membrane potential. Okay, yes, in which situation? Remember, when muscle or in case of the nerve you can say is stimulated at the resting condition, muscle will show, nerve will show. What is the nerve? बेटा nerve भी कुछ और नहीं है, ये modified muscle है which is having high excitability property, very high excitability property. Okay, so what you have to remember? Yes, see here, what is the our action potential? आराम से याद करेंगे. Series of the potential changes that occurs in the membrane potential when muscle or nerve is stimulated. जब आपने उसको stimulate किया तो उस सिचुएशन में करंट में, पोटेंशियल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज अवर एक्शन पोटेंशियल. गेटिंग द पॉइंट? फाइन सर. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. विद इन दिस एक्शन पोटेंशियल दो इंपॉर्टेंट आपको फेस देखने के लिए मिलेंगे. व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फेसेस? सी हियर, सपोज दिस इज अवर सेल. यस सर, एंड here you are able to look for the nucleus. Fine sir. So you are giving the stimulation. Suppose आपने इलेक्ट्रोड के थ्रू स्टिमुलेशन दिया, you are giving the current. Okay, so initially it was -90 millivolt. Okay, it is -90 millivolt, but then it will show the certain changes, and again for the balance, for the homeostasis, again it will come to the our -90 millivolt. So we are going to look for this. So during this all the activity, पहले क्या होगा, इस सेल में हमारे प्लस चार्ज अंदर आएंगे. ओके, फिर प्लस चार्ज बाहर जाएंगे. सो देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द आयनिक एक्टिविटी. सो इट विल शो द depolarization. Yes, I told you what is the depolarization, and then again it will show the repolarization. So these are the two important words. Yes, we will see that plus charge will come inside, so there is a disturbance in the ion, and then plus charge will go outside. So plus is coming and then plus is going. So first there is a depolarization and then there is a repolarization. Getting the point? So we are going to start this all the points step by step. Okay, so let's start our action potential curve. Okay, so just to try to understand, take a single page and we are going to draw the very important our action
potential curve. So this is very very important. Remember, it is very most important question for the MCQs, for the your theory exams. Okay, so we are going to look for this all the things, and then we will write down the flow chart also. So just try to understand what is happening. Yes, we are taking the our axis. Yes sir, this is our curve. Fine. So it is showing our time duration, and it is showing our yes, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से इस करो को समझना बेटा. सी हियर, yes, you are taking amplitude at one axis. Amplitude means you can say the milliampere at vertical axis, while we are taking our time in millisecond along the horizontal axis. Okay sir, so now try to understand. Cell is at resting period. So at the resting period, I told you there is a minus 90 millivolt. So you can understand, yes, at the resting condition the curve will be straight because there is a no change in the current. सेल आराम कर रहा है, ना तो प्लस अंदर जा रहा है ना तो माइनस बाहर जा रहा है. सो देयर इज अ नो चेंजेस इन द करंट. सो दिस इज जस्ट आवर yes resting membrane potential. So this is our first phase, resting membrane potential. Getting the point? Now try to understand, there are the different stages. How you can understand? Yes, आपने इस पॉइंट पर सेल के साथ छेड़खानी की, आपने स्टिमुलेशन दे दिया. So you are giving the stimulation at this certain point. So there will be the changes. So the point where we are giving the stimulation, that is shown with such kind of the artifact. Okay, there is a small change in the resting membrane potential point of stimulation. So we are giving the name this point as simply point of stimulation. Are you getting the point? So we are looking for the our different terms. पहला चीज नंबर देते चलो, resting membrane potential. Second point, yes, point of stimulation. Okay, now जैसे ही हमने स्टिमुलेशन दिया तुरंत रिस्पॉन्स नहीं होता. रिमेंबर, क्लास में अटेंडेंस हो रही है, टीचर इज सेइंग रोल नंबर 36 एंड वी आर नॉट अवेयर. रोल नंबर 36, ओके यस सर आई एम प्रेजेंट. सो देयर इज द वन पर्टिकुलर गैप बिटवीन द स्टिमुलेशन एंड द रिस्पॉन्स. टीचर ने रोल नंबर का नाम लिया और हमने प्रेजेंट सर यस सर कहने में थोड़ा सा टाइम लिया. इन द सेम वे, व्हेन यू आर गिविंग द स्टिमुलेशन, the neuron or the cell is not exactly exciting that time, it is taking few time. So that small interval when it is showing response, that is known as latent period. So this is our latent period. So this is the third point, known as latent period. Okay, what is the latent period? The time interval in between the point of stimulation and the response. अभी response शुरू नहीं हुआ है. So that very small time interval is known as the latent period. Getting the point? Fine. Now again try to understand what is happening. So now there is the current is coming. See here, basic fundamental. This is the our cell. Yes sir. What is happening? There is the our nucleus. Fine sir, we are catching the point. You are stimulating with the help of the electrode. So electrical energy will change the ionic balance here. So what is happening? There are the sodium channels. Separately I will teach you the sodium channel, H gate, M gate with the proper reference of the Ganong and the Guyton later. Okay, but right now yes, as you are stimulating, सोडियम जो है वो भड़क जाता है, वो बोलता है कि तुमने मुझको छेड़ दिया, अब मैं सेल के अंदर आक्रमण करूंगा. I will enter within the cell. So there are the special kind of the channel, sodium channel. With their help, the sodium is going inside. And yes, 3 sodiums are going inside. So what is happening? The small channels are there, sodium channel. So there is, as you are giving the stimulation. Okay sir,
sodium channels are getting open. And again I will teach you, according to the Ganong and the Guyton, there are the two types of the sodium channel: slow sodium channel, fast sodium channel. So initially there is the opening of the slow sodium channels. ओके सर, और एक बार सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है, सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैं अंदर आ गया हूं, मेरे दोस्त तुम सब जल्दी जल्दी अंदर आओ. सो इट विल ओपन द मोर सोडियम चैनल, दे आर कंपेरेटिवली फास्ट इन स्पीड, so they will open the fast sodium channel. Okay, so initially there is the slow entry of the sodium ion, then later there is the fast entry of the sodium ion. Now try to understand. पहले बेटा बाहर में प्लस था, अंदर में आपका क्या था, माइनस चार्ज. गेटिंग द पॉइंट. लेकिन अब प्लस अंदर आ गया, तो क्या आप इसको पोलराइज्ड कंडीशन कहेंगे? नो सर, now it is not in the depolarized condition, because now the plus 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 is entered. Now this is the situation depolarization. Yes, it is starting of the depolarization, because initially slow sodium channels are opening, so you can divide this one under the two phase. Yes, slow depolarization. Yes sir. And when the fast sodium channels are getting open, then you will say fast depolarization. Yes sir, there are the two phases, slow depolarization and the fast depolarization. Slow depolarization, initial phase; fast depolarization, later phase. All the concept we are looking. Initially there is the, yes, why it is occurring? Due to slow sodium channel opening, due to slow sodium channel opening. Later, yes, it occurs due to fast sodium channel opening. So this is your basic concept. So this is your conceptual box. Okay, these things are not usually found in textbook. ये आपको समझना पड़ता है. Okay, so these classes will help you to get all the concept from the very basics. We are starting from the physics, chemistry level. Okay, okay sir, fine. So now what will happen? Try to understand now. Next concept. Okay sir, there is a current changes. Can you tell me? Plus charge is coming inside, and here you are showing the minus 90. Again, try to understand this important point, that in the curve, above is the positive side. So suppose here is the minus 90, minus 70 millivolt, so on. Okay, minus 50, minus hour, yes, so on. And here we are showing, suppose this is our 0 millivolt. Getting the point? And further, what are the useful data? We are just showing that things. Okay, so up to this point, the important data, that is our plus 50 millivolt. Why? I will tell you. So these are the important data. Okay, now try to understand another important points. Yes, स्लो सोडियम ओपन, तो क्या ये कर्व आपका स्ट्रेट जाएगा? नो सर, देयर विल बी द डेविएशन. आइदर इट विल गो अबव और इट विल गो डाउन. वी डोंट नो. नाउ अप्लाई द लॉजिक. व्हेन द प्लस चार्जेस आर कमिंग इनसाइड, यस, व्हेन द प्लस चार्जेस आर कमिंग इनसाइड, सो व्हाट विल हैपन? करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज. कर्व को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? बिकॉज द प्लस चार्जेस आर कमिंग, दैट्स व्हाई डेफिनेटली द कर्व शुड गो अबव. सो दिस कर्व इज rising. Yes, this curve is rising. Okay, so what is happening? This curve is rising slowly, slowly, slowly up to the our, remember this point, this is minus 75 millivolt. Yes, this is important data. Up to the minus 75 millivolt, it is getting rise. Why? Remember the important points. Yes, this particular point, it is the site where there is the opening of slow sodium channel. So at this point there is opening of
which type of the sodium channel? Slow sodium channels. Getting the point? So this is our fourth point. And due to the opening of the slow sodium channel, what is happening? See here, there is an influx of the sodium, and the speed is, remember, the speed is slow. So what you can say? Yes. Next point, we are also writing all the flow chart. Yes, see here, the fifth point, there is the slow sodium influx. सोडियम जो है धीरे धीरे एंटर करेगा, so there is a sodium influx, but better to say slow sodium influx. Okay, so there is the rise in our curve. लेकिन now try to understand, after this our minus 75 millivolt, there is the rapid entry, there is the opening of the fast sodium channel, जिसके कारण तेजी से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. So what I want to tell you now, the next steps, there is the rapid sodium entry. So what you can say, there is a rapid sodium influx. Yes. Sixth point, rapid our sodium influx, rapid sodium influx. So now in your viva questions are asked, what you will say about this special point? See here, this point from where the curve is rising, कर्व का स्पीड आप देख रहे हैं क्या बेटा, ये ऐसा है, लेकिन इस पॉइंट से अब कर्व आपका स्ट्रेट नहीं जाएगा, बट इट विल रन वेरी फास्टली. So less time will be taken because the time is here. Okay, so less time means more steep curve, sharp curve. So the curve is rising with this speed. Getting the point? Yes. Now the curve is rising with very high speed, with the very less duration, up to the which part? Can you observe here? This is our 0 millivolt. So it is reaching up to the 0 millivolt. Why? Due to the rapid influx of the sodium, rapid entry of the sodium. Getting the point? So what you have to understand, your viva question, this certain point when there is the opening of the fast sodium channel. So remember, at this stage, this is the 6. Yes, here is opening of fast sodium channels. This particular point is known as firing level. So this is your MCQ. What is a firing level? Firing level. So this is important. Firing level is nothing. Yes, it is opening of the fast sodium channel. It is the point when the slow sodium channels, they are stopped and fast sodium channel they are opening. So rapid entry of the our sodium influx is there. So this is our seventh point, rapid sodium influx. Okay, so the curve is rising very very sharply up to the our 0 millivolt. फाइन, लेकिन क्या ये रुक जाएगा? नो, सोडियम इन्फ्लक्स अभी बंद नहीं होता, इट इज मोर गोइंग टू द हाइट साइड. सो इट इज राइजिंग अबव दिस our 0 millivolt and it is reaching up to the, yes, plus 55 millivolt. Are you getting the point? Yes, it is reaching up to the plus 55 millivolt. Okay, so here is also sodium influx. Sodium influx continue. That's why our depolarization also continue after 0 millivolt. So there is the sodium influx. Okay sir, so this particular point, try to understand, from this our 0 millivolt up to the plus 55 millivolt. Yes, it is above the 0 millivolt, it is above than expectation. That's why it is known as overshoot. So this is another very 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 important question for all of you. Getting the point? Okay,
So this is our overshoot. So remember that is our overshoot. So this is our overshoot. ये भी आपको वाइवा एमसीक्यू में पूछा जाता है. आई एम शोइंग ऑल द एमसीक्यूज विद द क्यू. Firing level is asked Q. Getting the point? Okay. Now try to understand this all the phenomena up to this point, up to this certain point. Yes. This all the things is depolarization. Yes, sir. From the side of the our depolarization. From the our side of the depolarization. आपने जहां से stimulate किया. So just look at this color coding. This all the blue color part is showing our depolarization. Yes, sir. This all the part is our depolarization. Getting the point? Okay. So just look here. This is all about the depolarization. मैंने आपको दो फेज बताया, depolarization and repolarization. Yes, sir. So this is our depolarization phase. Yes, sir. This is our depolarization phase. Okay. Now try to understand what is happening after this. हर चीज की एक सीमा होती है. Everything is है certain limit. Now what is happening? Fine, sir. This cell was showing influx of the sodium. Now after certain limit, ये सेल कहेगा नाउ इट इज सफिशिएंट, नाउ आई हैव टू बिकम अगेन नॉर्मल. सो फॉर बिकमिंग अगेन नॉर्मल व्हाट इट विल डू, इट विल पंप आउट द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड. सो अनदर पॉजिटिव चार्ज, यू नो, पोटेशियम. यस सर, पोटेशियम इज देयर. सो टू मेक बैलेंस लेटर आफ्टर सफिशियंट रीचिंग आउट एट द पीक लेवल, इसने पीक लेवल ले लिया, अब इससे ज्यादा ये डिपोलराइज नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, अपने नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल एनर्जी लेवल में पहुंचने के लिए पॉजिटिव चार्ज को बाहर करेगा. विच पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन, यू नो, पोटेशियम. सो इट इज डूइंग पंपिंग आउट ऑफ द पोटेशियम. सो देयर इज अवर पोटेशियम चैनल ओपनिंग, and this opening of the potassium channel that is causing, yes, that opening of the potassium channel that is leading to the, yes, potassium efflux. Okay. Now again apply the knowledge. बेटा पहले आपके पास क्या हो रहा था, 10 रुपीज आया, 100 रुपीज आया, प्लस चार्ज आया. नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, अब इसके आगे और सोडियम नहीं आ सकता, बल्कि पोटेशियम बाहर जा रहा है. यस, पोटेशियम इज गोइंग आउटसाइड. So what, how you will present the curve? You will present the curve upside or you will present the curve downside? Definitely पहले प्लस आया तो ऊपर गया, अब प्लस बाहर गया, so the curve will fall down. So what I want to tell you, yes, now there is the falling down of the our curve. So how it will shown, but remember potassium is comparatively less charge, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा. So the curve is falling down in such kind of the way with more duration, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है. Okay, and it is reaching up to the same level, it is reaching up to the same level. Are you getting the point? Yes, up to this point it is reaching again. Fine. Why, sir? Here is our potassium efflux. Yes, so here is our potassium channel opening that is resulting in potassium efflux. Getting the point? Again try to understand this particular point, when it is reaching to the top level, that is known as our spike potential. Remember, this spike potential is plus 55 millivolt for the muscles. Okay, sir. What is happening at this stage? Remember, at this stage there is closure of sodium channel. जितने भी सोडियम चैनल थे वो क्लोज हो गए, and there is our opening
ऑफ यस पोटेशियम चैनल जो थे वो ओपन हो गए. गेटिंग द पॉइंट. दिस इज द क्लोजर ऑफ द सोडियम चैनल एंड opening of the potassium channel, and due to the opening of the potassium channel you are getting potassium efflux. So just try to understand, we had reached up to the 7th point, rapid sodium influx, and then there was the next point you have to say about the overshoot. Then you have to say about the 9th point, spike potential. At this point you have to mention, yes, there is a closure of the our sodium channel and opening of the potassium channel, 10th point. And then you have to say about the our 11th point, this phenomena is leading to the potassium efflux. Getting the point? Okay. And now try to understand the our other points. See here, this another phase now which has been started, that will be known as, yes, अब सेल फिर से वापस अपने पुराने सिचुएशन में जा रही है. दैट्स वाई दिस फेस विल बी नोन एज रीपोलराइजेशन. सो वॉट एवर नाउ वी आर गोइंग टू रीड, दैट ऑल द थिंग इज अवर रीपोलराइजेशन. सो हियर इज अवर रीपोलराइजेशन स्टेट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, हियर इज अवर रीपोलराइजेशन स्टेट. यस सर, इधर हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी अवर रिपोलराइजेशन. नाउ सी हियर इट इज रीचिंग टू द सेम पॉइंट. यस सर, इट इज रीचिंग टू द सेम पॉइंट. फाइन. सो आफ्टर दिस सी हियर, अभी सोडियम, अभी जो पोटेशियम चैनल है वो बंद हो जाना चाहिए, बट नो, इट इज नॉट गेटिंग स्टॉप्ड. यस, इट विल अगेन, इट इज रिमेन्स ओपन, सो इट इज गोइंग फॉर द मोर अवर depolarization. So what is happening? This is our state of the, yes, here is your depolarization, this is your repolarization. So here what you are looking, again it is reaching to the our polarized condition, but it is going again downside. Okay, so what you will say, this is our situation, polarized condition. So this is after polarization. What you can say, this is our phase which you are looking here. Okay, so what you will say, this is the phase, you can say after polarization. Again it is reached to the our polarized condition, or you can say after depolarization also. So this is our after polarization. Can you see? Depolarization, this is the repolarization, this is the polarized condition, but after the polarization it is again going downside. Okay, so you can say after polarization, after hyperpolarization, but again, yes, you can say this is our hyperpolarization state also. बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया हाइपर पोलराइजेशन. सो डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड. ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोलर हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, जितना होना तो उससे ज़्यादा नीचे आ गया. दैट्स वाई हाइपर पोलराइजेशन. फिर इसको याद आता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव हो गया, आई हैव टू कम एट द नॉर्मल लेवल. सो अगेन देयर इज द channels are acting and they are keeping this one at the normal level. So this particular phase is known as, yes, this particular phase is known as our, remember, different books are there, different terminologies are there. So right now this phase is known as our, remember, after hyper polarization. So just to remember, I am making the wording easier for all of you. यहाँ पर क्या था बेटा? Hyperpolarization. See here again, this phase is our slow depolarization, rapid depolarization. Then there is the repolarization, but it is going to excessive polarized condition. That's why hyperpolarization, and then it is coming to the normal side. That's why after hyperpolarization. Okay. फ्यू टर्मिनोलॉजी डिफरेंस विल बी देयर इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक. ईजी करने के लिए हम ये वर्ड्स लर्न कर रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट? एंड रिमेंबर, दिस जीरो पोटेंशियल पार्ट इज नोन एज अवर आइसोइलेक्ट्रिक बेस लाइन. यस, दिस इज अवर आइसोइलेक्ट्रिक बेस
जहां पर करंट जो है जीरो है, इसी को ही आप मेजर करते हैं एज अ आइडियल लाइन. सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक बेस. ओके, so you can see this all the potassium efflux is leading to the our 12th stage, that is repolarization. Okay sir, and this repolarization further continues. That's why you can say after repolarization and then it is leading to the our hyperpolarization, and now the curve will continue as the same because this is same situation known as our yes रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं कहानी फिर से पहुंच गई. सो दिस इज अवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन potential, again it is gained. So this is 15th point. Okay, so here we had described all the different points. For the beauty of the diagram, we are using this color coding also. Otherwise एग्जाम में ये कलर कोडिंग नहीं करना, आपके पास टाइम इतना नहीं रहेगा. टू मच आंसर यू हैव टू राइट डाउन. ओके, फॉर द थ्योरी. ओके, so remember this is your presentation, again summary, and then we are going to make the our notes. और इसके बाद बेटा आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द समरी फ्रॉम द गायट एंड गैनोंग, योर सैम्बुलिंगम. ओके, विच विल हेल्प यू टू पास द एग्जाम एकेज एंड दिस ऑल द थिंग्स. सो जस्ट सी हियर, कहानी की तरह समझते हैं, सोचते हैं. पहले सेल आराम कर रहा था, रेस्टिंग कंडीशन में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. उसको आपने करंट दिया, स्टिमुलेशन दिया, पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, एंड देन अगेन रिवाइज विथ मी, यस, टॉक विथ मी, यस, देयर इज अवर यस stimulation. So can you repeat with me? Yes, I am doing. Unmute yourself. Let's see, क्या आप इस लायक हैं कि आपको सिर्फ स्टेप्स बोलने हैं. सो टॉक विथ मी बेटा, टॉक विथ मी. यस, यू ऑल कैन अनम्यूट योर सेल्फ. यस, ये सबसे पहले बेटा क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेज में था. अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे? यस, टेल मी द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन. ओके, अब यस पार्टिसिपेट बेटा, पार्टिसिपेट, क्योंकि हमको ये वन वे लर्निंग नहीं, ये टू वे लर्निंग है. सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन. देन अगला फेज, तुरंत सेल जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. यस, वेरी गुड. लैटेंट पीरियड, बहुत बढ़िया. नाउ आफ्टर द लैटेंट पीरियड, इस स्टेज में क्या हुआ? फोर्थ स्टेप. यस, वेरी गुड. यस, ओपनिंग ऑफ द स्लो सोडियम चैनल. अब इमेजिन करो बेटा, जैसे ही स्लो सोडियम दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? सोडियम का एग्जैक्ट बेटा, वेरी गुड. यस, पोटेशियम इफ्लक्स बेटा बाद में होगा, अभी स्लो सोडियम चैनल अंदर आया, कोई बात नहीं. और याद रखेंगे, गलतियां होती, गलती करनी, ये प्लेटफॉर्म हमारा गलती करने के लिए. बट एट टाइम ऑफ एग्जाम वी विल लर्न फ्रॉम दिस अवर ऑल द मिस्टेक्स. तो पहले आपको और डिस्क्राइब करना है. यस, स्लो सोडियम चैनल इज गेटिंग इनफ्लक्स. सो व्हेन देयर इज अ स्लो सोडियम चैनल इनफ्लक्स, slow movement of the sodium, so slow depolarization. This phase is slow depolarization. Then opening of the fast sodium channel, क्या बोलेंगे इसको? Firing level. So as this firing level is obtained, what is happening? Exact, there is the opening of the fast sodium channel, so fast sodium influx, so fast depolarization. Now it is going above the 0 millivolt. So this particular potential is known as overshoot. Exact. So it is reaching to the topmost part. This is known as exact spike potential. Can you tell me spike potential at what is the value? Plus 55, because above the 0. That's why plus 55. So this is your MCQ. Now limit has been crossed. All the sodium channels have been closed. और हर कोई बेटा नॉर्मल होना चाहता है. मैं अगर घर से बाहर घूमने गया हूं तो एक टाइम आएगा कि मैं घर वापस आऊं. सो इन द सेम वे द सेल इज एक्साइटेड. नाउ इट वांट टू डू रेस्ट अगेन. सो हाउ इट कैन रेस्ट? सोडियम चैनल विल बी क्लोज्ड, पोटेशियम चैनल विल बी ओपन. यस, सो व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? यस, दैट इज द repolarization potassium efflux. Exact beta. Now due to the our potassium efflux, this all is situated going to the normal level. So this is our yes repolarization. So when it is coming to the repolarization, तो क्या होता है? Yes, when the potassium is going out, excessive potassium is leaking. So what is happening? Excessive amount of the potassium is going out. So it is reaching to the
more negative value. So this is our hyperpolarization. Also you can say after this is the repolarization. So after repolarization, again I want to tell you different textbook different terminology will be used for this. Okay, fine. फिर इसको याद आता है, नो आई हैव टू कम फॉर द नॉर्मल लेवल. सो व्हाट यू विल से आफ्टर hyperpolarization and then it is reaching to the normal level, that is the resting membrane potential. Clear beta? So now see here, there is a no need to read the textbook. I am writing all the things for your study purpose. जितनी चीजें हम पढ़ें उसको रिवाइज करने के लिए हम नोट्स लिख रहे हैं. सो जस्ट सी हियर, इंपॉर्टेंट events with ionic changes. All the MCQs, all the theories are covered here. So just start this story. No need to read the book, only go through these notes. क्योंकि आपने हर चीज को समरी करके इस नोट्स में इंक्लूड कर लिया है. एंड अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज दिस ऑल द नोट्स. ओके, एंड practice gives perfection. If you are doing more and more practice, that will make perfect to you. Okay, so first stage, definitely sir, there is the resting membrane potential. Getting the point? Okay, so there is the our resting membrane potential. So now again try to understand, that was our minus 90 millivolt MCQ. Fine sir. Second point, we had seen the point of stimulation, so you have to include the point of stimulation. Getting the point? Yes, that is our stimulus artifact. Okay, and then third one is our latent period. Yes, latent period. Third stage, latent period, no response was there. And then another one, there is initiation of the depolarization. Yes, so there was initiation of what? Depolarization. How? Do you remember? There was opening of the slow sodium channel. Okay sir, so it was leading to, तो ये क्या कर रहा था? ऑल द नोट्स वी आर इंक्लूडिंग. सो इट वॉज लीडिंग टू अवर स्लो सोडियम इनफ्लक्स, स्लो sodium influx, and due to the slow sodium influx there was the slow depolarization. Getting the point? Okay, now try to understand our further things. After this stage, fifth one, you can say it is reaching to the firing level. Yes sir, at this firing level what is happening? Fast sodium channel is opening. Due to the opening of the fast sodium channel, there is the fast sodium influx. Due to the fast sodium influx, there is the our fast depolarization. Yes sir, there is a fast depolarization. Getting the point? Now after this you can say there is the crossing. Now it is crossing to the isoelectric baseline, so it is reaching to the 0 millivolt and crossing isoelectric baseline. Yes sir, it is crossing the isoelectric baseline and it is showing the phenomena of the overshoot. Yes sir, and then it is reaching at the top level. So what you can say, it is reaching to the spike potential, and that is our plus 55 millivolt MCQ. And now at this stage what you can say, that sodium channel, yes, closed. Very good. Potassium channel beta open. Yes, potassium channel beta open हो जाएगा. Yes, participate in your discussion beta. Very good. Now what is happening as the potassium channel is getting open? Now what is the phenomena? That potassium efflux. Very good.
वेरी गुड। तो अब बेटा पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर से बाहर जाएंगे, दैट्स वाई वी विल यूज द टर्म ई फ्लक्स, ओके, दैट इज लीडिंग टू द रीपोलराइजेशन। आप थ्योरी को आपके बुक में जो ऐसे है उसको फ्लो चार्ट में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जा रहे हैं, पढ़ने में आसानी होती है, तुरंत रिवीजन होता है, ओके। सो नाउ इट इज गेटिंग एक्सेसिव रीपोलराइजेशन, ये बहुत ज्यादा रीपोलराइज हो गया, सो दैट इज नोन एज अवर आफ्टर अवर पोलराइजेशन, ओके। तो बेटा कुछ बुक्स में मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसका नाम आपको मिलेगा आफ्टर डीपोलराइजेशन भी मिलेगा, आफ्टर डीपोल, क्योंकि ये डीपोलराइज कंडीशन में पहुंच गया है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड, दैट्स व्हाई, ओके। नाउ सी हियर, इसके बाद इसको याद आएगा नहीं मुझको तो नॉर्मल लेवल में पहुंचना है, तो अब ये हाइपर पोलराइजेशन, यस इट इज रीचिंग एट द अवर हाइपर पोलराइजेशन, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, सो हाइपर पोलराइजेशन फेस, फिर से ये नॉर्मल होगा, दैट इज अवर आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, and then lastly the resting membrane potential is again gained, okay. So it is now ready for next excitation and action potential। तो सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स कर गया, अब अगला स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये फिर से आपका रिस्पॉन्स शो करने के लिए रेडी है। सो इन दिस वे बुक की जो थ्योरी है गैटन गैनोंग सैम्बोलिंगम एकेजेन सबको हमने इजी करके एक फ्लो चार्ट में लिख दिया, विच विल बी इजियर फॉर द स्टडी पर्पस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर टुडेज क्लास। इसके आगे क्लिनिकल आएगा, इसके आगे लेटेंट पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इनके कॉन्सेप्ट आते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ओपन गेट, क्लोज्ड गेट, इनएक्टिव गेट, इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसके बेसिस में एंटी इपिलेप्टिक ट्रीटमेंट, इवन द एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इनके कॉन्सेप्ट बनते हैं। सो वी विल सी दिस ऑल द थिंग्स इन आवर अपकमिंग पार्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास and hope you all enjoyed the session. Kindly send your feedback at our app, and again I am pasting the important links for all of you. Kindly stay connected with our app. You can download our app where you will get the different our important links, okay. So you can join the WhatsApp group. Yes, our thank you very much to all the Philippines students, Kartike and the Rajnandgaon students who joined the platform. So this is the our WhatsApp group, you can join beta here, and I am linking, I am pasting the our different YouTube channel videos, again you can see at the chat box, so you can go with the our different links, okay। तो बेटा इनको आप इनमें कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बीच बीच में फ्री वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ऑल्सो for the all kind of the systemic study you can get the first year all the 3 subject NART physio biochem, and second year all the subject second year app, okay। और बेटा अभी आज के लिए हम एक अच्छा ऑफर आप लोग के लिए दे रहे हैं, अगर आप 10 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, ओके 10 बच्चों के ग्रुप बनाते हैं तो सिर्फ 6,000 रुपीज में 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप को, ओके हम 10 बच्चों को अपना ऐप प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को। आज रात तक 12 बजे तक 10 बच्चों का अगर ग्रुप बनता है तो सिर्फ 7,000 रुपीज में पूरे सेकेंड ईयर के ऐप को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट इट इज फॉर द 10 स्टूडेंट्स ग्रुप। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लाइव डाउट डिस्कशन सेशन, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ऑल्सो आई एम राइटिंग phone number, so any kind of the thing you can stay connected with us, so you can connect, you can directly talk with me at this number 9131783495। बेटा ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर मैं फ़ोन पिक ना कर पाऊँ तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्लासेस के शेड्यूल सुबह 4 बजे से मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, ओके। और दिन में 6-7 क्लासेस डेली होती है, और हम कोशिश करते हैं कि रोज़ एक फ्री डेमो किसी न किसी सब्जेक्ट का हो, सो दैट इन दिस लॉकडाउन पीरियड यू ऑल कैन गेट बेनिफिट, ओके। अगर मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाया तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आई विल
call back you. Okay, so you can stay connected with this number and kindly connect with our all the dear students. So thank you again, all the Philippines students, Rajnandgaon students, and our Maharashtra students also here. So thank you very much to everybody. Now we are starting our live doubt discussion. Thank you.